हाय गाइस, आज के दिन हम बाइक से नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज बहुत बारिश हो रही है। तो हमने सोचा कि कार ले लेते हैं और कार से हम जा रहे हैं बिजली महादेव, वहाँ से ट्रैक करके ऊपर जाएंगे। तो जिसके गाड़ी में हम जा रहे हैं वो भी ट्रिप्स कराते हैं। तो अगर आपको कैब बुक करना है, मनाली लोकल टूर या लेह तक भी जाना है तो वो ड्रॉप करते हैं। तो उनका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यू कैन टॉक टू हिम एंड ही गिव्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। और एज यू नो, ये जवानी है दीवानी की शूटिंग मनाली में हुई थी। सो दिस इज द प्लेस वेयर देयर इज अ सीन वेयर द ट्रक कम्स इनसाइड द होटल एंड दिस इज वेयर इट वाज शॉट. And one reason why we came here by car was because of the roads and the weather. So it was very rainy and road बहुत ही पतले हैं. It's a very thin road and lot of slush and मतलब it's not very safe. But at the same time there are patches where you'll find better roads. It's a mix. And you'll also see apricot gardens in between, apple trees also. यहाँ पे थोड़े तो apricots बढ़ चुके थे. It looked like guava, but yeah, these are apricots. And after 1.5 hour, 2 hours का drive, we reached the point where the trek starts. Here it's written as 1.5 kilometer. Trek start कर दी and बीच में लोग आग भी ताप रहे थे. There was a fireplace where people were cooking and you'll find many beautiful plants here. इतना बढ़िया सीढ़ी बना हुआ है. You can like easily walk on the steps and reach up. It's a very nice, easy kind of trek for 1.5 kilometers one way. The best part of the trek is that till a point of time you will be able to meet local people, talk to them about their life and stuffs. मस्त एकदम जंगलों के बीच में सीढ़ी बनी हुई है. It's a very green, nice place. Looks very nice. So this is a plastic-free zone. We are not the first, we are not the last. So preserve nature for the future. क्या ढूंढ रहे हैं भैया? क्या ढूंढ रहे हैं? लीगड़ी मतलब? सब्जी क्या? सब्जी? सब्जी। ओह। सब्जी ढूंढनी पड़ेगा। कैसा होता है? कैसे होता है? ओह। At some points you will also see beautiful sceneries. और this has become like that Meghalaya's living double-decker bridge. I don't know if it's 1.5 kilometer or more. We're just keeping on climbing and we can't even see the valley yet. Let's keep climbing. I think we are almost reaching the place. इसके आगे तो कोई रोड नहीं दिख रहा है. There'll be a lot of stalls ahead also, but this is the first lady we saw and we got some prasad from her. So I think it was not 1.5 kilometers. It was 1.5 hours. Yep. And once you reach the top, guys, ये जन्नत है. You can see a 360-degree view of mountains, snow-capped mountains, beautiful rivers and whatnot. It was the most spectacular thing that we saw. वो आ गया बिजली महादेव. यार भगवान के पास जाओ, जब तक थोड़ा चल जाए, सांस फूल जाए, तब तक मज़ा नहीं आता. यहाँ से तो नज़ारा इतना सुंदर है. चारों तरफ पहाड़ दिख रहे हैं. बर्फ वाले पहाड़ तो एकदम सामने दिख रहा है. So Bijli Mahadev is one of the ancient temples in India and it's dedicated to Lord Shiva. Every 12 years the Shiva lingam is struck by lightning which causes the lingam to break into pieces and the priest then wraps the broken lingam with butter and after the few days the lingam becomes as it was. Well, since photography inside the temple wasn't allowed, we were not able to capture it, but we captured an amazing thing that we saw we've never seen before. Yep, so we saw some beautiful lady Buddhist monks sitting there and praying for all the dead people in the world. Isn't that so amazing and like out of the world, like selfless?
अभी मेरी वाइफ सुसाइड मिशन पे जा रही है। It's a beautiful no? While coming back, you can just stop over at any of the dhabas and have some amazing food. आंटी एकदम फ्रेश वाले पराठे बना रही हैं। Guys, if you're new to our channel, do subscribe and spread a word by sharing our videos. तो ये लिंगड़ी है और ये यहाँ पे जंगलों में ही होता है, तो इसको उगाया नहीं जा सकता. यू कैन नॉट ग्रो इट. इट विल बी ओनली अवेलेबल इन द जंगल्स एंड यू हैव टू फाइंड इट. सो That's what people do here. उसकी अचार बनती है बहुत अच्छी. Try लिंगड़ी. इसका टेस्ट जो है बीन्स जैसा है, हल्का हल्का, बट आम जैसा भी है. नाइस. सो अगर आप यहाँ पे हो तो आप लिंगड़ी का अचार भी ट्राई कर सकते हो. इट्स समथिंग डिफरेंट.